हेलो एवरीवन। सो गाइस, स्टोरी टेलिंग का सीरीज है। गाइस, मेरा टारगेट है कि कम से कम भी तो आपको 100 स्टोरीज तो मैं करा दूं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मेरे वीडियो का इंतजार जरूर किया कीजिए, क्योंकि वीडियो आपको काफी हद तक कुछ सिखा जाएगा। गाइस, चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। 100 एपिसोड्स हमें करने हैं। तो गाइस, ये जो कहानी है, इसमें जो सबसे पहला बॉक्स आप देख रहे हैं, इसमें है कि एक हस्बैंड है, सुबह उठा, फ्रेश हुआ, उसका नाम रमेश है, और उसकी वाइफ जिसका नाम पार्वती है, उसने नाश्ता बनाया। हस्बैंड ने नाश्ता किया और उसने अपने बच्चे को लेकर घर से निकल गया, बच्चे को स्कूल ड्रॉप किया। उसके बाद वो बस स्टॉप गया, बस पकड़ के वो ऑफिस पहुंचा। ऑफिस में वो काम करने लगा। शाम को उसे सैलरी मिली, सैलरी वाला दिन था, उसे सैलरी मिली। सैलरी लेकर के वो घर आया, उसने सैलरी को अपनी वाइफ को दिया। वाइफ ने देखा कि वही सैलरी, कोई इंक्रीमेंट नहीं है। वो गुस्से में आ गई, हस्बैंड से लड़ने लगी कि तुम कभी मुझे लग्जरी लाइफ नहीं दे पाओगे, हमेशा वही सब कुछ। फिर वो सो गए। नेक्स्ट डे पार्वती की एक पड़ोसन ने उसको अपने बर्थडे पर बुलाया कि मेरे बर्थडे पर आओ। जब पार्वती उसके घर गई तो उसने देखा कि बहुत ही शानदार शानदार कमरे थे, शानदार डेकोरेशन था, अच्छा ड्रेस था उसका। तो बड़ा अट्रैक्ट हो गई और उसे बुरा भी लगा कि मेरे पास क्यों नहीं है। अपने घर आई, फिर हस्बैंड से लड़ने लगी कि तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं कि तुम मेरे लिए ये कर सको। और अगले दिन जब स्कूल गया उसका बेटा, तो प्रिंसिपल ने उसे स्कूल से निकाल दिया, ये कहकर कि तुम्हारी फी जमा नहीं है, काफी महीनों से फीस पेंडिंग है। लड़का घर वापस आ गया और जब माँ ने देखा कि मेरे बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया है, तो लड़ने लगी पति से। इस बार लड़ाई कुछ ज्यादा ही हो गई और फिर माँ और बेटे ने घर छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, वो अपने मायके चले गए। अब अगले दिन ये जो लड़का है रमेश, इसने सोचा यार अब मैं क्या करूं, जीने से क्या फायदा है, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है, होते भी है तो मैं उनको खुश नहीं कर पाता हूं, कैसी लाइफ है मेरी, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। वो एक नदी किनारे गया, ब्रिज पर चला गया और कूदने ही वाला था कि उसने एक आवाज सुनी, लॉटरी वाले लॉटरी ले लो। पलट के देखा तो साइकिल पे कोई लॉटरी बेच रहा था। उसने कहा कि मरने से पहले एक बार किस्मत आजमा कर देख लेता हूं, क्या पता किस्मत में कुछ हो। उसने लॉटरी का एक टिकट खरीदा। अगले हफ्ते किसी ने दरवाजा नॉक किया, उसने दरवाजा खोला, सामने एक आदमी था। उसने कहा, मैं एक लॉटरी इंस्पेक्टर हूं, रमेश कुमार आप ही हैं क्या? उसने बोला, हाँ। आप 1 करोड़ रुपए जीत चुके हैं। शॉक हो गया वो, रोने लगा खुशी के मारे। आगे क्या हुआ आपको आगे कमेंट में लिखना है कि आगे क्या हुआ। मैं पहले इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर दूं क्योंकि हमारा मेन टारगेट अंग्रेजी है। चलिए गाइस, हम कैसे बोलेंगे इसको। पास्ट टेंस 100% चाहिए। देखते हैं क्या कुछ यूज होता है। पहले बॉक्स को एक्सप्लेन करते हैं। वेल, दिस स्टोरी इज अबाउट अ फैमिली। देयर वाज अ हस्बैंड नेम्ड रमेश। One day, as usual, he got up around 6 o'clock in the morning. After that, he performed his morning ablutions, या कह सकते हैं he got fresh. Morning ablution का मतलब है कि जो भी सुबह के काम होते हैं, नहाना, ब्रश करना, मुंह धोना, whatever, वो सब ablutions में आ जाएगा। He performed his morning ablutions. Meanwhile, his wife made breakfast for him, and having taken breakfast, he, along with his son, left the house. He dropped his son at his school, and from there he went to the bus stop and got on the bus. He reached office and started working. In the evening, he was given his salary. Having taken the salary, he came back to his home and handed over it to his wife. Seeing the same amount, wife got angry and she started a verbal altercation with him, saying that you will never give me luxury life, there is no car, I don't have this, I don't have that. She said a lot of things and a huge drama took place. After that, they both slept. Next day, Parvati, wife of Ramesh, was invited by one of her neighbors to attend her birthday party. When she
went to her house, she got mesmerized, fascinated, seeing the beauty of the house, seeing the enticing interior of the house, seeing the alluring, enchanting dress her neighbor was wearing. She got happy and sad at the same time. When the party was over, pulling her long face, she came back to her home and started quarreling with her husband. She said, "Go and see Mrs. Sharma. See what kind of dress she has. Go and see the interior of her house. And look at us. Look at this house. You have given me nothing but tension." Anyhow, they both slept. Next day, when their son, Chintu, went to his school, he was thrown out of the school by the principal just because he had not submitted his fees for many months. He came back home and narrated everything to his mother. This incident raised her hackles. She got furious and she started having a quarreling conversation, a verbal altercation with her husband. And this quarrel took an ugly turn, due to which she left this house along with her child and she went to her mother's house. The man, Ramesh, was left alone in that house. Next day, he decided to commit suicide, thinking that now he was left with no one. He didn't have any family member to support him. When he had any family member, he was not happy, he was not able to satisfy them. So finally he decided to end his life. In order to do this, he went to the nearby river. He was on the bridge and he was about to jump off the bridge into the river. Suddenly he heard a sound emanating, "Buy a lottery ticket, buy a lottery ticket." He turned around and saw a person on a cycle selling some lottery tickets. He thought for a while and decided to give his fate a try. He wanted to check whether his fate is going to give him something or not. With a view to doing this, he bought a lottery ticket and went back to his home. After a week, somebody knocked the door. When he opened the door, he saw a person standing at the door. The person asked, "Are you Mr. Ramesh?" He said, "Yes, I am." The person said, "I am a lottery inspector, and I would like to inform you that you have won a lottery for 1 crore rupees." Hearing this, he got transfixed. His eyes welled up. He was not able to make any decision. He started crying and laughing at the same time. Then के बाद आपको बनाना है, आप क्या बनाएंगे? तो समझ रहे गाइस, आप खेलने लगेंगे स्टोरी के साथ, मजा आएगा आपको. कुछ नहीं है, सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड. उसने कहा ये, कहा तो ये डायलॉग, मैंने पूछा तो ये डायलॉग. इतना बेहतरीन है कि आप रोज स्टोरी टेलिंग करने को परेशान हो जाएंगे. आप चाहेंगे कि मैं स्टोरी करूं. आप मार्केट में कुछ भी करके आएंगे और एक बार कहेंगे कि यार मोबाइल लेके बैठ भाई, मोबाइल लेंगे बैठ जाएंगे कि ये लो भैया मैंने ये किया. करके देखिए, मैं आपके साथ हूं, आप करके देखिए, होगा कैसे नहीं यार, होके रहेगा. ठीक है. हाँ, बस रोना नहीं रोना है. 4 लोगों से ये नहीं कहना है कि पता नहीं मुझसे नहीं होगा, पता नहीं मेरे लिए तो अंग्रेजी बनी नहीं है, मेरी तो वही हालत है, पहले ना मैं वर्ड मीनिंग सीखूंगा, डिक्शनरी खत्म करूंगा. कुछ नहीं हो पाएगा. डिक्शनरी ना खत्म कर पाएंगे और खत्म कर भी लेंगे तो अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे. लिख के देता हूं, अंग्रेजी तभी बोल पाएंगे जब रोज थोड़ा थोड़ा बोलेंगे. एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस.
यही सच्चाई है, नहीं तो टीचर बदलते रहिए। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।